Yes, dear student. So our third part of seventh chapter, Sanhati Karya Sadhika. Right? The work can be accomplished with having the unity. Okay? So in this chapter we have seen that there is a crow and that crow saw the hunter and that hunter had spread a net, and after spreading a net he had thrown on it, scattered on it the rice pieces, right? And after that rice pieces he had hidden behind a tree, and at that time the family of Chitragriva was passing through it, and they saw the rice pieces and they became greedy. And at that time, Chitragriva advised them not to go down for eating the rice pieces because this is a forest and this is a lonely forest. And how can rice pieces be there in this forest? So there might be some trick, he said. But the young pigeons did not want to hear his words. Okay, according to them, the words of the old people should be heard at the time of calamity, right? But when there is the thing of eating and drinking, they should not hear him. Okay, that we have done. And everything should not be looked with doubt, according to him. Okay, so if we will look at the doubt with all the things, then how can the work be done and how can we live the life? And as he has spoken all such things, all the pigeons believed him, and they sat down on the net. And as they sat down on the net, they all were caught. Right? And when they all were caught, they began to blame the person with whose words they had been caught. Right? And that's why Chitragriva heard all these things, and he said that now there is no need to scold anyone. Right? Now one thing you have to do is having one mind, you all fly together. Right? Then he said, Yataha, because अल्पानामपि वस्तूनां संहतिः कार्यसाधिका तृणैगुणत्वमापन्नै बध्यन्ते मत्तदन्तिनः. क्या कहा उसने? अल्पानामपि वस्तूनाम. अल्पानाम मीन्स स्मॉल थिंग. अल्पानाम मीन्स स्मॉल. वस्तुनाम मीन्स थिंग. संहति मीन्स यूनिटी. कार्य साधिका मीन्स accomplish the work. तृणै गुणत्वमापन्नै. तृणै मीन्स grass. गुणत्वमापन्नै means the togetherness of grass. बध्यन्ते मत्तदन्तिनः. बध्यन्ते means tied. मत्तदन्तिनः means, dear student, mad elephant. ओके, क्या कहा उसने? देखो, छोटे से छोटी वस्तु चीज होती है, मगर वो जब एक साथ हो जाती है ना, तो क्या होता है? वो काम करने लगती है, काम पूरा हो जाता है. जैसे एक ग्रास का आप वो लो, एक ग्रास लो आप, तो उसको तोड़ोगे तो तुरंत टूट जाएगा. मगर 10-15 ग्रास साथ में होगा तो आर यू एबल टू ब्रेक इट? नो. राइट? तो जो ये घास जो है वो अगर साथ में हो जाए तो एक क्या हो जाता है? रोप हो जाता है. राइट? डोरी हो जाती है, और उससे हम पागल हाथी को भी काबू में कर सकते हैं. ये बात उसने इधर कही. राइट डियर स्टूडेंट? सो राइट डाउन द ट्रांसलेशन. ओके, इसका अल्पानाम अपि वस्तूनां संहति कार्य साधिका तृणै गुणत्वमापन्नै बध्यन्ते मत्तदन्तिनः. राइट डाउन द यूनिटी
of even the small things, the unity of even the small thing accomplishes 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 the work. उसमें ही लिखना दूसरी लाइन का ट्रांसलेशन. By the blades of grass, BLADES, by the blades of grass, the rope is made. The rope is made. And the mad elephant is tied with it. Tied with it. Tied with it. Now make a paragraph. इति विचिन्त्य सर्वे कपोताः जालमादाय उत्पतिताः. इति विचिन्त्य, उसने कहा ना चित्रग्रीव ने ये सब बातें, इसलिए ये सोच के all the pigeons जालम आदाय taking the net उत्पतिता fly away. Right? On thinking in this way, all the pigeons flew away, FLEW, flew away, taking the net. ततः स व्याघः तान् जालापहारकान् अवलोक्य पश्चात धावती. ओके, और जैसे ही वो लोग नेट लेके उड़े ना, तो ये जो पेड़ के पीछे खड़ा था ना, ये जो हंटर, उसने देखा कि ओ ये तो जाल लेके उड़ रहे हैं, तो वो भी पीछे पीछे दौड़ा. राइट? ततः देन सव्याघः मीन्स दैट हंटर, तान जालपहारकान मीन्स द टेकिंग अवे दैट नेट, अवलोक्य मीन्स सीइंग, पश्चात धावती मीन्स ही रैन after them. Right? Write down. On seeing them, carry away the net. On seeing them, carry away the net. The hunter ran after them. The hunter ran after them. परंतु तान् सुदूरं गतान् दृष्ट्वा व्याघः प्रतिनिवृत्तः. मगर क्या हुआ, वो बर्ड्स तो ऊपर चले गए और ऊपर चढ़ के फास्ट वो उड़ने लगे. इसलिए क्या हुआ, वो जो था वो इतना झड़प से नहीं दौड़ पाया, और जंगल था तो वो कैसे दौड़ेगा उनके पीछे. राइट? इसलिए वो थक गया, तो वापिस आ गया कि ये तो दूर चले गए, अब मैं इतना नहीं दौड़ पाऊंगा. राइट? तो क्या लिखेंगे, परंतु तान् सुदूरं गतान् दृष्ट्वा व्याघः प्रतिनिवृत्तः. परंतु मीन्स बट, सुदूरान् गतान् मीन्स बहुत दूर, वेरी फार, दृष्ट्वा सीइंग, व्याघः प्रतिनिवृत्तः, व्याघः मीन्स द हंटर, प्रतिनिवृत्तः मीन्स रिटर्न. राइट? But
seeing them gone far away, but seeing them gone far away, the hunter returned. The hunter returned. RETURNED. लुब्धकं निवृत्तं दृष्ट्वा चित्रग्रीवः अवदत्. ओके, लुब्धकम मीन्स हंटर, निवृत्तम दृष्टवा मीन्स वो पीछे आ गया, वापिस आ गया, वो देख के चित्रग्रीव अवद, चित्रग्रीव ने कहा कि चित्रग्रीव ने देखा कि हाँ देखो वो थक गया, वापिस चला गया, अब वो हमारे पीछे नहीं आएगा, इसलिए चित्रग्रीव ने कहा. राइट डाउन. Having seen the hunter gone, having seen the hunter gone back, Chitragriva said. Chitragriva said. Chitragriva का C कैपिटल, कॉमा इंटू इन्वर्टेड कॉमा. इन्वर्टेड कॉमा में लिखना बेटा. हिरण्य नामकस्य मम मित्रस्य मूषकराजस्य समीपे वयं गच्छाम. क्या कहा उसने कि मेरा एक मित्र है, क्या नाम है उसका? हिरण्यक. राइट, कौन है वो? मूषकराज मीन्स द किंग ऑफ रैट्स. उसके पास हम जाते हैं. राइट, तो लिखो उसमें इन्वर्टेड कॉमा करके लिखना. वी ऑल गो near my friend who is the king of mice, M-I-C-E, who is the king of mice, named, N-A-M-E-D, named हिरण्यक. हिरण्यक H कैपिटल बेटा. ओके, HIRNYAK, हिरण्यक, फुल स्टॉप. उसमें ही लिखना इन्वर्टेड कॉमा में. स अस्मान बंधनात् मुक्तान करिष्यति. वो हमको क्या करेगा? अस्मान मीन्स टू अस, बंधन मीन्स बॉन्डेज, मुक्तान मीन्स फ्री, करिष्यन्ति मीन्स विल डू. राइट, write down. He will make us free from the bondage. From the bondage. ततः ते मूषकराजस्य समीपं समगच्छन्. ततः then, they मूषकराजस्य means the king of mice, samipam means near, samagachan means went. Then they all went to the king of mice. To the king of mice. चित्रग्रीवस्य मित्रेण मूषकराजेन स्वकीयैः तीक्ष्णैः दन्तैः सर्वेषां बन्धनानि छिन्नानि. राइट, चित्रग्रीवस्य मित्रेण द फ्रेंड ऑफ चित्रग्रीव, मूषकराजेन मीन्स द किंग ऑफ माइस, स्वकीयैः मीन्स हिज, तीक्ष्णैः मीन्स शार्प, दन्तैः मीन्स टीथ, सर्वेषां बन्धनानि छिन्नानि. क्या किया? बंधनानी मीन्स द बॉन्डेज, ओके, ऑफ एवरीवन फ्री. ओके, बॉन्डेज या तो टाइड. ओके, राइट डाउन. द फ्रेंड ऑफ चित्रग्रीव, कॉमा, the king of mice cut down the ties of all, TIES, ties of all with his sharp teeth.
with his sharp teeth. Okay. चित्रग्रीवः अपि हिरण्यकस्य आभारं मत्वा सपरिवारः यथेष्टदेशान् समगच्छत्. राइट डियर, क्या आएगा? चित्रग्रीवः अपि मीन्स चित्रग्रीव ऑल्सो, हिरण्यकस्य ऑफ हिरण्यक, आभारं मत्वा मीन्स थैंकिंग हिम, सपरिवार मीन्स विथ हिज फैमिली, यथेष्टदेशान् मीन्स टू हिज सिलेक्टेड प्लेस, समगच्छन् means went. Right? Chitragriva also having given thanks to Hiranyaka went to the selected place. Went to the selected place. Right, dear students? So this is our story of संहति कार्य साधिका. राइट, वो सब इकट्ठे हो गए तो वो लोग क्या हुआ, अपने आप को बचा पाए. ओके, अगर वो इकट्ठे नहीं होते तो वो लोग क्या होता, वो जो हंटर था ना वो उनको पकड़ लेता और वो सब मर जाते. राइट, सो दिस इज द स्टोरी. राइट, आई होप यू हैव understood it well. Now see, dear student, the words which I have underlined, that you have to remember and you have to write down in your notebook. Okay, so see the glossary. Shalmali taru yani silk cotton tree, vihagah bird, vayasa crow, krutanta yamraj या तो god of death, व्याघ हंटर, तंडुलकणः राइस ग्रेन, कपोत पिजियन, कापुरुष कवर्ड, विस्मय एस्टोनिशमेंट, मूषकराज किंग ऑफ माइंस. राइट, उसके नीचे देखो श्री लक्ष्मी, संहति यूनिटी, उसके नीचे देखो जालम नेट, भद्रम गुड. राइट डियर स्टूडेंट, this is the words that you have to write in your notebook and you have to remember also. Okay, dear student? Then turn the page. Then turn the page. See, on that page at last there is word sandhi. Right? Have you got it? There is word sandhi. उसमें जो मैंने अंडरलाइन की है ना, वो संधि आपको लिखना है और याद रखना है. इधर है प्रातरेव, प्रातः प्लस एव, तन निरूप्यताम, तत् प्लस निरूप्यताम. राइट, फिर युपस्थिते, युपस्थिते, ही प्लस उपस्थिते. ओके, देन सर्वत्रैवम, सर्वत्र प्लस एवं. ओके, देन चित्रग्रीवोपि, चित्रग्रीवः plus api. Okay, dear student, so we have done the translation of this chapter. We have seen the words and we have seen the sandhi. Okay, the exercise which is there will be done in our next lecture. Okay, so till then, have a nice day, have a nice time and goodbye.